During our undergraduation, nothing can match the guidance that we get from a book. Hi, this is Dr. Anjali, and I am here to tell you what and which books you can prefer for your first year BNYS. In this video, I will be suggesting you books for both medical and for both naturopathy subjects. In first year BNYS, in the curriculum, we usually have 5 major subjects. Rest 3 are side subjects, but 5 major subjects, in which 3 are medical subjects and 2 are naturopathy subjects. So for the medical subjects, like anatomy, biochemistry and physiology, we have classes from Subhati Medical College, and rest subjects we have classes in our own college. So some people या some students have been facing problem like हमारा syllabus छूट जाता है या फिर हम cover up नहीं कर पाते, हम match नहीं कर पाते, sync नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉलेज में कई बार कुछ दूसरा टॉपिक चल रहा है और SMC में अगर जाएंगे तो दूसरा टॉपिक चल रहा है, so we miss out. So in this video, I will be giving you tips to catch through those topics as well as how to make and prepare notes again for the same कि आपका syllabus ना छूटे और जब आपके exams हो तो आपको help मिले कैसे. Firstly, I'll be telling you the name of the books. So first of all, the main subject which is yoga, ये एक ऐसा subject है जिसको आप अपने throughout BNYS, that means 4.5 years, excluding the 1 year of the internship, आप पढ़ेंगे. So yoga is one such subject कि अगर आप उसकी किताब आज लेते हैं तो वो आज से आपके आने वाले 4 साल तक वो किताब काम आएगी. So purchasing books for yoga is first of all very it's very important because it is going to help you throughout your 4.5 years of BNYS. So for first year, only for first year, for basic introduction and everything, I will recommend you the book Asan Pranayama Mudra Bandha, also known as APMB. So this book is from Bihar School of Yoga and written by Swami Satyanand Saraswati. मैं बताना चाहूँगी इस बुक में सारी चीज़ें बहुत ही सरल इंग्लिश में लिखी हुई हैं और इस तरह से लिखी हुई हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जो बेसिक नॉलेज योगा की होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, आसन, प्राणायाम, मुद्रास एंड बंधास, षटकर्मास, साइको फिजियोलॉजी ऑफ योगा, हाउ डज दिस वर्क in our body, how does yoga give benefits to our body, ये सब इसमें mention है with clear pictures of asanas and pranayamas, so you can easily understand what kind of like the procedure of performing the asanas through the pictures. So this book is very informative, and I recommend this book for first year, like highly recommend. Next naturopathy subject we have is philosophy of nature cure, PNC. So PNC includes every naturopathy subject. That means I'll try to explain this. हमारे 4 साल में जितने भी naturopathy subjects हैं, including massage, including hydrotherapy and fasting, तो PNC is a gist of all those subjects. That means in first year आप वो सारे subjects का थोड़ा पढ़ लेंगे जिससे आपको आइडिया होता है कि यार this is what is naturopathy about. और साथ में आप PNC में पढ़ते हैं कि the philosophy of nature cure, why returning to nature is important, and why this therapy, why this pathy was actually needed. It is needed in this era. Why? So PNC is such a subject जो आपको एक ओवरऑल व्यू देता है पूरे आपके BNYS का या पूरा आपका नेचुरोपैथी का कोर है, philosophy of nature cure. For philosophy of nature cure, I would ask you people, you can buy this book Towards Healthy Living by Dr. Y. Rudrappa, written by the founder of Arogya Dhama Trust. तो वैसे तो इसमें फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर में PNC सब्जेक्ट में जो हम पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बट इस बुक में इसके अलावा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपको किस डिसीज़ में क्या चीज़ नेचर की फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, प्राणायाम कौन से करने चाहिए, इवनिंग प्रेयर्स, भजन्स, रूटीन्स, एवरीथिंग. सो दिस इज आई वुड से दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक काइंड ऑफ थिंग. ये आपको वन रीड बुक है, लाइक पढ़ लिया ख़त्म कर दिया बुक को. So it is like that, and I will not recommend it, but I would ask you all to read it once. So coming on to the major issues of students which are medical subjects, and what kind of books we should prefer, how to prepare the notes.
So for how to prepare the notes, I will make a separate video for you all. But for understanding the for understanding the concepts, I would recommend you to purchase books, because these books will help you throughout your life. At least you should study from, every student should study from books. Apart from understanding from YouTube lectures, understanding a topic from YouTube lectures, you should go through the book once, because all the questions are made from that. So for anatomy, I would recommend you all to buy the book BD Chaurasia, and it comes in 4 volumes, the upper limb, lower limb, and then there is head and neck in 3rd volume, and then 4th volume is the brain neuroanatomy. So why I would recommend all of you to buy these books is, the only reason is because how to write, because everything is clearly explained with the diagrams, the language is easy, and the concepts are very easily to understand from these books, from anatomy of BD Chaurasia handbook. The first book is the handbook of general anatomy. तो इस बुक में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके बाकी सारी बुक्स को पढ़ने से पहले। जो एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अबाउट द स्किन, अबाउट द कार्टिलेजेस, बोन्स एंड टिश्यूज. So for that, this book is really important. You should cover this book entirely. हर चीज़ इसका पढ़ा होना चाहिए. बाकी कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिक होते हैं जो BNYS के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल प्लेक्सस अगर एक टॉपिक है तो वो एग्जाम्स में आते ही आता है. सो यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट फ्रॉम दीज बुक्स. ऐसा नहीं है कि आपको SMC में नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे या कॉलेज में नोट्स नहीं होंगे, बट बुक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अगेन सेम चीज़ कि आपको समझ आने के लिए, आपको ऑथेंटिसिटी पता होने के लिए, किसी सब टॉपिक के डायग्राम्स के लिए, उसके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ये है. Then this is the volume 1, and it contains everything about anatomy of upper limb and thorax, and the second volume is lower limb and abdomen and pelvis, and 3rd volume is head and neck, and 4th volume is about the brain and neuroanatomy. So इसके अलावा आपको ये ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है इन बुक्स की, आप वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं बुक को. अगर आप स्क्रीन से पढ़ना कंफर्टेबल फील करते हैं तो you can, if you think that this is very costly, you can easily study it from the PDF version of the books. Next, coming on to the subject of biochemistry, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एज ए नेचुरोपैथी ये इन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, everything about every medical knowledge about these concepts are easily explained in these books, and for that I would recommend you to buy Satyanarayan. Though there are other books also, and this one from Satyanarayan is very easily understandable, and the concepts are very clear, very short. No subject is negligible in first year. Every subject should be thoroughly studied. The next subject is the physiology. For physiology, there are many books you can prefer. I preferred the Venkatesh one, though I have another book also which is Sembulingam. Somewhere from here I'll add the cover page of the book. So these books of physiology, the Venkatesh and the Sembulingam. In the book Venkatesh, they will recommend you buying this book. Again, there is this chapter जो discuss करता है about the physiology of yoga as well. तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ योगा और वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ये सब भी इस बुक में लिखा हुआ है. एंड द नेक्स्ट बुक इज सेम्बुलिंगम. तो सेम्बुलिंगम भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, हर टॉपिक को एकदम क्लियरली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में. सो दीज आर द 2 बुक्स जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी. AKGN बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है, तो वो बुक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप AKGN पढ़ सकते हैं, बट फॉर BNYS फॉर द करिकुला इतना इन डेप्थ नॉलेज और ये सब फर्स्ट ईयर में ज़रूरी नहीं होता है. फर्स्ट ईयर के लिए आप बाय कर सकते हैं वेंकटेश एंड सैम्बुलिंगम फ्रॉम फिजियोलॉजी. आई होप you find this video informative, and for other more such videos, please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much.